जाकर पूछ सकते हैं। आप बताइए ना, आप तो रहे हैं। पार्टी को बचाने की बात नहीं है। उनको लगता है कि भाई ये करके हम यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे, और जो वो बताते हैं कि भाई बिहार की जनता का सेवा हम करते रहना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि जिस फॉर्मेशन में भी बेहतर वो काम कर सकते हैं उसके साथ उनको रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के रूप में उभर सकते हैं वो? मैं बिल्कुल ही इन बात पे टिक्का टिप्पणी मैं कह रहा हूँ। मैं इस पूरी घटना को बिहार के नज़रिए से देखता हूँ। मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, इसका बाहर इम्प्लीकेशन कम से कम आज शॉर्ट रन में कुछ नहीं है। अच्छा, इसकी पटकथा जो है लालू जी के साथ आने की और नरेंद्र मोदी के साथ छोड़ने की, ये बहुत पहले से लिखी जा रही थी। इस पर मैं वॉच कर रहा था 4 महीने से। आपसे बात भी हुई है कई बार मेरी। सबसे बड़ी बात कि इसी कड़ी में आरसीपी सिंह को मुझे लगता है मोहरा बनाकर, और आपसे भी दिल्ली में मिले थे, उसके बाद खबर आई कि प्रशांत जी से मेरे संबंध अच्छे हैं, जबकि प्रशांत जी को तो धक्का मार के पार्टी से निकाला गया था उसी आरसीपी सिंह के चलते। और उसी दिन नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं बहुत प्रिवी हूं बातों की। आपको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया? नहीं, इन बात को मैंने आपने पीछे भी इंटरव्यू में पूछा है, मैंने उस समय भी खंडन किया था कि इस तरह के अफवाह पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। नीतीश जी मेरे से ज़रूर मिले थे मार्च में, मेरी उनसे अच्छी बात हुई थी। उस समय भी मैंने उनको कहा था कि मैं बिहार में एक नया ऑर्गेनिक प्रयास करना चाहता हूं, और आप चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पहले उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के क्यों नहीं बने? क्या आप नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, ऐसी कोई बिल्कुल बात है। आप जबरदस्ती अपने से ऑफर दिलवा रहे हैं। नहीं, तो क्यों नहीं बने आप? क्यों आप उन पर भरोसा नहीं है? क्योंकि एक बार आपको पार्टी से निकाल दिए थे आरसीपी सिंह के चलते, अब आरसीपी सिंह को निकाल रहे हैं। जो वही ललन सिंह पेट में दांत बोलते थे उनको। देखिए, अगर आरसीपी सिंह जी के वजह से मैं रहता या छोड़ता तो आज आरसीपी जी पार्टी में नहीं, मैं चला जाता उनके पास। जैसे आप बता रहे हैं कि वो हमको बुला ही रहे हैं, क्योंकि आप नीतीश कुमार को पहचान गए कि कब ये धोखा दे देंगे, पीठ में छुरा भोंक देंगे। ऐसी बात नहीं है। मैंने ऑन कैमरा कहा है कि मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत मधुर संबंध है। जो सरकार ऐसा व्यक्तिगत संबंध है कि धक्के मार के निकाल दिया, व्यक्तिगत संबंध बना रहे हैं आप? वो धक्के मार के निकालने की बात है कि भाई उन्होंने, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी ने सीए एनआरसी पर एक स्टांस लिया था, उस पर मेरा उनसे विवाद हुआ, उसकी वजह से उनकी वो प्रेरोगेटिव उन्होंने निकाल दिया था। बहुत अच्छा किया उन्होंने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे नीतीश जी से अगर बातचीत होती है, कुछ अगर ऑफर करते हैं आपको, तो आप जाएंगे उनके पास? क्योंकि अब परिदृश्य तो बदल चुका है, आप भी एंटी मोदी स्टैंड में हैं। भाई मैं एक अपना नया प्रयास बिहार में कर रहा हूँ, मैं इस पर टिका हुआ हूँ। नीतीश जी क्या ऑफर करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने पहले भी ऑफर किया होगा। मुझे उन ऑफर से कोई लेना देना नहीं है अभी। तो आप अपना जहाज खुद बना रहे हैं? मैं बनाऊं, मेरा जहाज बने, नाव बने, न बने, डूब जाए, मेरा कोई उससे मतलब नहीं है। अक्टूबर से पदयात्रा शुरू होगी, क्या होगा थोड़ा उसके बारे में बताइए। भाई, जो मैं पदयात्रा करने की मैंने घोषणा करी है 2 तारीख से, जब तक मैं पूरे बिहार में पैदल घूम ना लूँ, लोगों से मिल ना लूँ, हर गांव, हर पंचायत, हर शहर गांव में जहां पहुंचने की बात है, वो पहुंच के मैं लोगों से मिलना, संवाद स्थापित करना चाहता हूं। उसके बाद देखेंगे कि पदयात्रा नीतीश कुमार के बारे में लोग क्या बोलते हैं? आप जब घूमते हैं, लोग तो इतना अदला बदली करते हैं, अल्टी पल्टी करते हैं। देखिए, मैंने ये अभी पहले की भी एक इंटरव्यू में बताया कि जो मैं फ़र्क देखता हूँ लोगों के मिजाज में नीतीश कुमार को लेके, 2010 वगैरह में तो एज ए सिटीजन हम लोगों ने देखा है, बड़ा आदर उनका रहा है इस स्टेट में। 2015 में जब हम लोग आए थे यहाँ पर चुनाव प्रचार करने महागठबंधन का, तो जो लोग वोट नहीं देते थे, क्योंकि एक मोदी का वेव आ गया था और एक बड़ा वर्ग बिहार में जो मोदी जी के नाम पर वोट करता है, वो जो लोग वोट नहीं करते थे महागठबंधन को, आपने भी देखा होगा, वो नीतीश कुमार जी को गाली नहीं देते थे, नीतीश कुमार जी के लिए अपशब्द का प्रयोग भी महसूस करता हूँ। अब पहली बार मैं अब देख रहा हूँ, अभी मैं 3-4 महीने से ही रहा हूँ और ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि बिहार के हर आदमी की बात मैंने सुनी है, लेकिन अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जब आप नीचे जाते हैं तो लोग नीतीश कुमार जी या उनके गवर्नेंस के मॉडल या उनके काम काज के तरीके को लेकर इस तरह के शब्दों के प्रयोग करते हैं जो पीछे के कालखंड में दूसरी सरकारों के लिए। मेरा अगला सवाल कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2017 में वो अलग हुए और सांप तक बोला लालू जी ने कि नीतीश सांप है और केचुआ छोड़ देता है, पलटी मार। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार चलेगी? इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतने हैं। भाई, चलेगी नहीं चलेगी वो जो सरकार में है उनकी चिंता है, मेरी चिंता तो है नहीं। राजनीति है, जो जिस साइड चला जाता है फिर वो दूसरे को के लिए अपशब्द। क्या लगता है कि 24 में अगर चुनाव हार जाते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे, तो फिर से बीजेपी की तरफ आएंगे नीतीश जी? कहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? किसने किसको बना दिया?
ये तो आप लोग मीडिया में बनाए जा रहे हैं कब से। भाई कहाँ किसी मादा नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। कहा नहीं, मैंने कहा कि इसकी कहाँ, मीडिया को छोड़कर मैं ये चर्चा कहीं नहीं सुन रहा हूँ कि कहाँ कोई बैठक हुई, कहाँ किस फॉर्मेशन ने, किस गठबंधन ने किसको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दिया। तो सब सेकुलर पार्टी से टच में है, बाकी उन लोग क्या कह रहे हैं? शरद पवार, आप किसी भी पार्टी से बात कर लीजिए, बोल ही रहे ना कि कहीं चर्चा नहीं है, मीडिया में चर्चा है। ये चर्चा मीडिया में है, मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाई बिहार में क्या हो रहा है उसका, कहीं कोई बैठक नहीं हुई, कोई ग्रुप मीटिंग नहीं हुई। अगर आती तो मुझे भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी होती कि भाई सबने मिलकर तय किया कि XYZ इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। वो खबर तो अभी आई नहीं है, ये आप लोग चला रहे हैं या लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। जिससे बात का आखिरी कब हुई आपकी? हो गए कुछ दिन हो गए बातचीत ऐसे, कुशल क्षेम के लिए। अभी उनको कोविड हुआ था तो फिर उसी संदर्भ में बात हुई थी फोन पे। बाकी आप कुशल क्षेम के बहाने राजनीति डिस्कस कर लेते हैं। कोई डिस्कस नहीं, बस फोन पर इतनी बात हुई, कैसे है, ठीक है, बस इतनी बात। वो भी बोलते हैं बहुत पुराना संबंध है और आपको धक्का मार के निकाला था, है? मतलब ऐसा संबंध तो मैंने देखा ही नहीं कि गाली गलौज करो, धक्का मारो और बोलो कि बहुत पुराना संबंध है। गाली गलौज तो कभी किसी के लिए मैंने नहीं किया है और उन्होंने भी मेरे किया, लेकिन उन लोगों ने तो कहा नहीं, नीतीश को कुछ नहीं आता है, क्या है। ठीक बात है, नहीं आता है तो स्वाभाविक बात है, वो बड़े नेता है, कह सकते हैं। नीतीश जी ने ऐसा कहा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। Prakash Singh in conversation with political strategist Prashant Kishor. Now let's go across to Piyush, who's there in the Bihar capital, the scene of hectic political activity. He is in conversation with senior BJP leader and Union Minister Ravi Prasad. Let's listen in. Joining me is a senior BJP leader, Ravi Prasad. We are live right now, sir. What do you have to say on this flip-flop of Nitish Kumar? Why couldn't BJP anticipate that? There is no question of anticipating. It is a textbook case of rank opportunism. Nitish Kumar has compromised on the issue of corruption, probity, political propriety and political integrity. Why he left 2017 relationship with Tejasvi Yadav? Because he could not reply on the issue of corruption, the railway scam, Bharti scam, apart from fodder scam when he came with us. What has changed now, Nitish ji? Have you got all the answer? Therefore, your flip-flop, the people of India have seen and the people of Bihar have seen. Tejasvi Yadav is saying that he's perfect for Prime Ministerial post because he is the experienced Chief Minister. Your comments on that? दिन में ख्वाब देने पर कोई पाबंदी नहीं है जनाब, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है पीएम के पोस्ट के लिए, 24 में भी 29 में भी. How is BJP preparing now? We will go on the ground. We know the pulse of the people. The people of state of Bihar are with BJP. Are BJP workers happy with this? Because many of them I've spoken to, they are saying that now BJP will emerge as the single largest force here in this state. Yes, they are saying. Rightly so. Thank you. Ravi Prasad, in conversation with Republic, says the people of Bihar are watching, the people of the country are watching all the flip-flops that and all the activities of Nitish Kumar, and that there is clearly no vacancy for the position of Prime Minister either in 2024 or 2029. It's over to Piyush to tell us what's happening there in the BJP camp. The BJP also set to make a big show today. A protest march, we believe. Piyush, we just heard your conversation with the top BJP leader, Ravi Prasad. Tell us everything about who is present right now. Is the stage set for, well, all the hectic political activity? The BJP too would be having its own strategy. Well, absolutely, Rukma. BJP is all set to carry out this massive protest right here in Patna at BJP headquarters. Right behind me, you can see the CEO of BJP workers who are chanting slogans against Nitish Kumar. We are showing you live pictures of the top leaders of BJP, including Ravi Prasad, Giriraj Singh, former Deputy Chief Minister Kishor Prasad, Ram Kripal Yadav, all the parliamentarians of BJP have come here and they are chanting against Nitish Kumar. You can also see they are also holding some placards which reads Nitish Kumar dhokebaz hai. So we can clearly see how the
BJP has upped the ante against Nitish Kumar, and they are protesting in BJP office. They are saying that Nitish Kumar has deceived BJP because he is the one who got a lot of support from BJP. He was also declared as the leader of National Democratic Alliance, and under Nitish Kumar itself, BJP was fighting elections. So we can clearly see the live pictures coming in from the BJP office, where the top leaders of BJP are present. They are protesting against Nitish Kumar, raising slogans against Nitish Kumar. Let me try to get in a word from few BJP workers also here to get a sense of the protest which they are right now doing. Let me ask from this lady who is now protesting here. किस तरह की क्या मांग रख रहे हैं आप? हम लोग मांग यही रख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार को नीतीश कुमार जी ने दगा दिया है पूरे बिहार की जनता को, ये जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पलटू राम को जिस तरह से पार्टी बदल के दल बदल अपने स्वार्थ के लिए पूरे बिहार को धोखा दिया है, ये बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर आई हैं। महिलाएं क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? आप महिला कार्यकर्ता हैं। लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस विश्वास से उनके साथ रहा था, वो एक महिलाओं का विश्वासघात किया है। महिला उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पूरे बिहार की महिला उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। Clearly see the pictures coming in from here from BJP office where people are also raising slogans like Paltu Ram Hi Hi, and since yesterday we have heard the similar sort of slang being used for Nitish Kumar. Let us also go ahead and show you more pictures. I would ask Suraj to pan his camera and show you more pictures of this protest which is right now underway. You can clearly see the top leaders of BJP, including Ravi Prasad, Giriraj Singh, Kishor Prasad, Sushil Modi. They all have gathered here and they all are protesting against Nitish Kumar. Many of them are also holding a placard which reads नीतीश कुमार जी जिससे आज आप मिले हैं उनके खिलाफ शुरुआत से लड़ते रहे हैं. So this is what the BJP is telling. BJP is sending out a message. We will continue to show you live pictures from here, from the BJP headquarters in Patna, where this massive protest is going on, where the top leaders of BJP are right now protesting against Nitish Kumar. Let me try to get in a word from the workers also who are sitting here. Rakesh Sinha is also here. So that's a very big day, and BJP is now sending out a clear message to all the workers that it is going to fight against the JDU and RJD, and it will continue to protest against Nitish Kumar. After this very short break, we will be getting more and more details as BJP hits the streets against Nitish Kumar in Patna. Stay tuned for more updates. जी आपने इस्तीफा दे दिया. सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए. हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया. क्या दिक्कत हुई नरेंद्र मोदी और अमित शाह से? क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं. पूरे देश में इस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं. विभिन्न चोटियों पे इस फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को, उसको झंडे को लेकर अब चोटियों पे आए हैं. उसका हम जश्न मना रहे हैं. भारत माता की जय. Mr. Rahul Gandhi raised the issue of institutions. जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित है. Wax heterologous COVID-19 booster for restricted use in emergency situation. In the month of July, the National Technical Advisory Group on Immunization recommended biological East Wax as a heterologous booster for adults. Earlier,
Biological East Cobivax received DCGI approval for a heterologous COVID-19 booster shot for restricted use in emergency situation. It is the first vaccine in India to get DCGI approval for a heterologous COVID-19 booster shot. After a major political shift in Bihar, Nitish Kumar and Tejasvi Yadav will be sworn in as Chief Minister and Deputy CM of the state respectively at 2 p.m. beginning the Mahagathbandhan back into power in the state. Sources in the know inform that more ministers will be inducted in the cabinet at a later stage. Shrikant Tyagi was sent to 14 days judicial custody till August 23rd by a Surajpur court after his arrest from Meerut. Tyagi was absconding since the time an FIR was lodged by the police on a complaint of a woman over Tyagi hurling explicitives. Taking out a leaf from the Aam Aadmi Party's playbook, Congress has now promised 300 units of electricity for the people in Himachal Pradesh if voted to power. In addition to that, the party has also promised to provide financial assistance of Rs 1,500 per month to all women aged between 18 and 60 years. As a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, Ramappa Temple of Telangana was beautifully illuminated in the tricolour theme. The UNESCO World Heritage Site Ramappa Temple is all set to celebrate 75th Indian Independence Day. Kapil sir, one question. Kapil sir, one question, sir. Varsha Rao appearing at the ED office. CISF Jawan injuries who took those bullets is dead. In what could be regarded as the heaviest rain in decades, South Korea's capital region was swamped this week, turning Seoul streets. You're watching live and breaking on Republic, and after the NDA walkout, Nitish Kumar set to take oath as Bihar Chief Minister for the 8th time. Those are visuals, Republic on the ground there in Patna. Those are visuals from the BJP headquarters in the Bihar capital. Piyush Mishra on that story. As you can see, this is the mega BJP showdown as Nitish Kumar is all set to form a new government with the Mahagathbandhan. And let's go across to Piyush. Piyush, take us through, the kind of, they say it's all about perception. What is the perception that has trickled down to the common man or woman whom we see there? The BJP protesters there. What is the perception now that Nitish Kumar has done it again? का इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता हम लोग को भारत की राजनीति में। आज हम धरना पे बैठे हैं और यहाँ पे सभी माननीय सांसद, यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में showing you the live pictures of this BJP protest which is right now underway in Patna. Top leaders of BJP have gathered here and they are protesting here. You can see how the top leadership of BJP is sitting here on protest. You can see the likes of Mangal Pandey, Ram Kripal Yadav and many other top leaders of BJP are here. Let me try to get in a word from Ram Kripal Yadav, the BJP MP, and try to understand as to how. And Republic also spoke with Vijay Chaudhary. Let's listen in. परिषद में रहेंगे, कितने के नहीं रहेंगे, या सब लोग मिलके सब लोग तय। मंत्री जाएगा तेजस्वी यादव को, सुन रहे हैं ऐसा कि मांग रहे हैं। देखिए, ये सब आप ही लोग के यहाँ मीडिया के यहाँ मांग रहे हैं और अभी ही थोड़ी देर पहले मीडिया के Well, that's Vijay Chaudhary, Minister of Education in Bihar, in conversation with Republic. का मैंडेट का अपमान किया है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि बिहार की जनता के साथ भी विश्वासघात किया है, खंजर घोंपने का काम किया है।
बिहार की जनता कभी इसको माफ नहीं करने वाली। पता क्यों नहीं चल पाया आपको कि नीतीश कुमार धोखा देने वाले हैं? पता क्यों नहीं चल पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग सोच है और कभी भी दिमाग में ना हमने कभी आज तक किसी को धोखा दिया है और ना हमारे मन में इस तरह की भावना आती है। मगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने धोखा देने का काम किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा Wax heterologous COVID-19 booster for restricted use in emergency situation. In the month of July, the National Technical Advisory Group on Immunization recommended biological Wax as a heterologous booster for adults. Earlier, biological Wax received DCGI approval for a heterologous COVID-19 booster shot for restricted use in emergency situation. It is the first vaccine in India to get DCGI approval for a heterologous COVID-19 booster shot. After a major political shift in Bihar, Nitish Kumar and Tejasvi Yadav will be sworn in as Chief Minister and Deputy CM of the state respectively at 2 p.m. beginning the Mahagathbandhan back into power in the state. Sources in the know inform that more ministers will be inducted in the cabinet at a later stage. Shrikant Tyagi was sent to 14 days judicial custody till August 23rd by a Surajpur court after his arrest from Meerut. Tyagi was absconding since the time an FIR was lodged by the police on a complaint of a woman over Tyagi hurling explicitives. Taking out a leaf from the Aam Aadmi Party's playbook, Congress has now promised 300 units of electricity for the people in Himachal Pradesh if voted to power. In addition to that, the party has also promised to provide financial assistance of Rs 1,500 per month to all women aged between 18 and 60 years. As a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, Ramappa Temple of Telangana was beautifully illuminated in the tricolour theme. The UNESCO World Heritage Site Ramappa Temple is all set to celebrate 75th Indian Independence Day. Kapil sir, one question. Kapil sir, one question, sir. Varsha Rao appearing at the ED office. CISF Jawan injuries who took the bullets is dead. In what could be regarded as the heaviest rain in decades, South Korea's capital region was. श्रीकांत के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। देख रहे हैं एक और कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन धराशायी हो चुका है। Hello and welcome viewers. Thank you for tuning into Republic TV. I'm Priyanka Sharma. We are live and breaking and of course straight away going across to the biggest story that we are tracking from Bihar, where the Mahagathbandhan Sarkar in fact has come into power, and now we are also learning from our sources that the Congress has also asked for 4 cabinet ministerial posts and also the Speaker of the Assembly as well. And of course we've learned that Nitish Kumar has been mulling over accepting these kind of something that has been put forward by the Congress party. And of course we have our correspondents on the ground. Let me also try to bring in Piyush as well, who has been reporting on this story, this mega political development from Bihar that we have been tracking for you. And of course the latest developments as far as the new government in question in Bihar is also concerned. And Piyush, my colleague, will also join me in just a few seconds, I believe. And we will try to go across to him, get the latest details as far as the changes in the government are concerned, and also
Yes, absolutely, Priyanka. I'm getting you the live pictures from Bihar BJP office here in Patna. Right now, you can see how there is a massive gathering of the parliamentarians. BJP MPs have gathered here in large numbers. They are protesting against Nitish Kumar. Many of them are holding placards which reads "Vishwasghati Nitish Kumar, Janadhar ka kiya apman." You can see how each and every leader here is very much aghast with the fact that Nitish Kumar has cheated, has walked out of NDA and has joined hands with Mahagathbandhan. So here the BJP is alleging Nitish Kumar of being the biggest ever cheater, and that is why they are protesting here in Patna BJP office. The leaders like Ravi Prasad, Prasad, Nityanand Rai, Sushil Modi, top leaders of BJP, Mangal Pandey, they all are present here and they continue to protest Nitish Kumar. They are also holding placards which reads Nitish Kumar ji, जिससे आप आज मिले हैं उसके खिलाफ शुरू से थे. Sir, the clear message is being sent across the people. Clear message is being sent. Tejasvi Yadav is saying that BJP is left with no alliance in northern India. See, you must be aware of his educational background. He doesn't know in Uttar Pradesh, Sanjay Nishad is a minister in the cabinet. He doesn't know Ashish Patel, Apna Dal head, is a minister in Uttar Pradesh. See, this is what his close relative Akhilesh Yadav had to say, and this is what he is saying. So it is very unfortunate that such people are there in the politics of Bihar, but this is the last laugh is going to be had by the people of Bihar when they are going to vote them out forever this time. What will happen in Lok Sabha 2024? A better result than all such past results, and Bihar will give thumping majority to Narendra Modi in Bihar. BJP is of the fact that Bihar will give a thumping majority to BJP in Bihar in 2024 Lok Sabha elections, and Nitish Kumar should forget about his prime ministerial ambitions because he has got no base, no support from the people of Bihar. It's a BJP which is going to emerge as the binding force. One more very important question I would like to ask from this BJP leader. Sir, do you think that in a way it has happened good for BJP because now BJP will emerge as the single largest force in Bihar? See, there is no denial of the fact that there was a lot of public pressure and pressure from the workers because Nitish Kumar was not at all able to perform as per the wishes of the people who gave this mandate. It was a very difficult situation. It was a very difficult situation. But people of Bihar had not expected that his rise into politics was against the fight of corruption against Lalu Yadav. He has joined hands once again. So nothing to be worried about. The people are very clear as far as now. You are saying that BJP workers were not happy in JDU? Not at all the way he was working this time. He was unable to work, whether it is lethargy or such designs that he was working upon. PFI model was also seen here. PFI activities were also seen in Bihar. See, that's also one of the reasons. In 15 districts so far, the NIA has already discovered how they are spreading. And these forces provide patronage to... नहीं कैबिनेट Well, viewers, we are breaking for you the latest as far as the Bihar politics is concerned. And of course, in the latest, we are telling you that the Speaker, Vijay Sinha, is set to be removed. In just the starting of the show, we had also told you that the Congress had also made several demands along with 4 cabinet ministerial positions that the Speaker should also be of their favor. Prakash Singh, who's been getting us all the updates from Bihar,
is joining me once again on the broadcast. Prakash, tell us more about the latest as far as the speaker being removed is concerned. What are your sources telling you? Well, there has been a no confidence motion against Speaker Vijay Sinha, and he will be removed very soon. Some MLAs have also issued a letter in the Bihar Vidhan Sabha, and very soon it was because of Speaker Vijay Sinha that the flashpoint where the controversy started and he misbehaved with Nitish Kumar. That's what the JDU alleges, and it was tried that there could be some deliberations on him. विजय जी, तो स्पीकर साहब के खिलाफ क्या मामला चल रहा है? क्या विधायकों ने लिख कर दिया है? नहीं, हमको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमने सुना है कि विधायकों ने उनके हटाने का प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को दिया है। अच्छा, जो नीतीश जी के साथ बदतमीजी किया था उन्होंने, जो जैसा कि आप लोग का आरोप है। नहीं, वो बात तो कब की खत्म हो गई। अभी तो सिर्फ उनको वो तो 1 लाइन नोटिस होता है, और उसमें जिन लोगों ने दिया है उनसे कोई मेरी बात नहीं है। तो ये तो जिन लोगों ने दिया है वही बता सकते हैं। तो केयर टेकर में महेश्वर हजारी जी जो डिप्टी स्पीकर हैं वो रहेंगे? अगर वो नहीं रहते हैं, वैसे भी अगर अविश्वास माने अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव का होता है उस पर विमर्श, तो स्वाभाविक रूप से उसमें ये भी नियम है कि तब वो चेयर पर नहीं रहेंगे। वो नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से डिप्टी स्पीकर रहेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी होगा। आप तो स्पीकर रहे, इसकी प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल वही प्रक्रिया है कि उस पर विमर्श होता है, लास्ट में वोटिंग होती है और उनको हटाया जाए। अब वोटिंग में जो निर्णय आएगा वो होगा। तो आप क्या सलाह देंगे? आप तो अध्यक्ष रहे, उनको हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, हम सलाह नहीं देंगे। वो खुद समझदार विद्वान सब कुछ हैं, वो खुद निर्णय लेंगे कि हट जाए। So, there we have Vijay Chaudhary is a former speaker. He is saying that Vijay Sinha should understand the present political situation and hinted that he should resign from the speaker's post, else there will be a no confidence motion against him. देश जब अमृत काल की तरफ जाने वाला है, फिर भी इसी बढ़ते हुए प्रभाव से, इस बढ़ते हुए जनमानस के प्रभाव से नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं और पुनः भ्रष्टाचार, दुराचार से गले लगाकर हमने पहले भी कहा था। Viewers, we are also getting you the latest as far as the visuals are concerned from Bihar, where the BJP in fact is carrying out a sit-in protest and have also stated that they are peeved with the kind of betrayal that they are facing from Nitish Kumar, and the BJP in fact has been staging this dharna just before the oath ceremony that is all set to take place. We heard several statements of the BJP leadership claiming that this is good for the बीजेपी में बिहार के लोगों में गुस्सा है। बिहार में इंडस्ट्री आ रही थी क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ चले गए जिनके नाम से उद्योगपति भाग जाएंगे। जिन्होंने बिहार में उद्योग भगाया है उनके साथ गठबंधन हो गया। क्या होगा रोजगार का, क्या होगा उद्योग का, क्या होगा उद्यमी का, क्या होगा बिहार के भविष्य का? नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके साथी अच्छे नहीं हैं। उनके जो साथी हैं उनके नाम से डरते हैं लोग। ये डर है, एक अच्छे साथी को छोड़ दिया कि अच्छा सिला दिया हम लोगों के प्यार का, ये तो बड़ी गलत बात है। जब भी मिलते थे कभी आभास नहीं हुआ कि वो छोड़कर जाने वाले हैं। हम लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, वो तो कोऑर्डिनेशन तो अच्छा ही था, वो हमें छोड़कर गए। वो बताएं आखिर क्या वजह थी? एक जो पार्टी पर इल्जाम है बहुत से घोटाले का, क्यों चले गए वो बताना चाहिए।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश देखिए, ये आज आरजेडी और जदयू का नेतृत्व जो है पूरी तरह से जेपी मूवमेंट की देन है। लेकिन जिस कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने संघर्ष करके नेता बनने का काम किया, आज दुर्भाग्य से उसी कांग्रेस के साथ चले गए। जिस आरजेडी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कारण उनसे गठबंधन तोड़ा, आज फिर से उनसे गठबंधन कर लिया। ये आश्चर्य की बात है। ये मैंडेट से विश्वासघात है। बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। Ahead of the formation of government of Mahagathbandhan, BJP hits the streets in Patna, where top BJP leaders are protesting against Nitish Kumar. After this very short break, we will be getting more and more details of the government formation in the state of Bihar. Stay tuned for more updates and keep watching Republic TV. Reading allows us to become familiar with ourselves. We don't read, we won't know what is knowledge. I just find it very interesting to know people's lives, how they went through certain situations, how they dealt with things. So wherever you want to go in life, if you read books along those lines, then that would really help you in growing. Reading could mean a million different things to every individual. What does it mean to you? Visit readindia.info to find out more. In what could be regarded as the heaviest rain in decades, South Korea's capital region was swamped this week, turning Seoul streets into car-clogged rivers and sending floods cascading into subway stations. At least 8 people lost their lives, some by drowning in their own homes, and 7 others were missing. Addressing Indian smartphone makers attempting to push Chinese firms out of the low-end smartphone markets, Chinese Foreign Ministry spokesperson whined, urging India to fulfill its commitment to open cooperation and provide Chinese enterprises with an open, fair and non-discriminatory investment and business environment. That's rich talk from a country where Google, Facebook and Twitter are all banned and copyright infringements are a business model. Congress MPs who are right now protesting. An Iranian satellite was launched into orbit and carried into space on a Russian rocket which took off from Kazakhstan. About 9 minutes after the launch, it placed the Iranian satellite called Khayyam into orbit. Taiwan's foreign minister has alleged that China aims to control the East and South China Seas via the Taiwan Strait, describing a greater ambition to upend the Asia-Pacific status quo and prevent nations from aiding the self-governing island. U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman, concluding her trip aimed at reaffirming ties in the Pacific, said Washington does not ask countries to choose between the United States and China. She affirmed it has been a priority for President Joe Biden to rebuild alliances and relationships around the world. A moving ambulance caught fire in Assam's Nagaon district on Tuesday evening. The incident took place in front of a petrol pump at Kawaimari area in the central Assam district. The occupants had a narrow escape as they managed to get out before the flames engulfed the vehicle. बुझा नहीं लगा हम लोग का पेट्रोल पंप पर थोड़ा बॉल था तो बॉल लेके हम लोग गिरा था बॉल फूटा है लेकिन वो बॉल थोड़ा काम नहीं किया है बहुत ज़्यादा लग गया फिर गाड़ी के मतलब आग कब कैसे बुझ गया फायर ब्रिगेड 10-15 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आया है. According to the police, the ambulance was carrying a patient towards the Nagaon town. Majibur Rahman, a police officer, said that there is no report of any casualties in the incident. Later, fire tenders managed to douse the flames.
Bureau Report, Republic TV. Never happened when you were under scandal, Karthik. You should be able to speak about it, Karthik. Welcome back, viewers. Staying with the biggest story today of Bihar and how we are seeing a government change and the oath-taking ceremony that is all set to take place. In the backdrop of that, we are seeing massive protests by the BJP, and my colleague Piyush is right there at that protest. He's been getting us all the voices of the BJP leaders as well. Piyush, if I could bring you in, you just spoke to several of the top leadership of the BJP where they're saying that it is better that Nitish Kumar has gone for the Lok Sabha elections, and also, but they are claiming that they are of course peeved with the kind of betrayal that they're saying of Nitish Kumar to the BJP, isn't it? Well, absolutely. And many of the BJP workers I've spoken to, Priyanka, they are saying that now it will be very easy for BJP to work harder and also get their own leader, because BJP does not have a bigger face in the state of Bihar, and that is the biggest concern of BJP. Right behind me are the pictures of protest of BJP, which is right now taking place, where the top leaders of BJP are protesting and raising their voice against Nitish Kumar. They continue to protest. They continue to demand that BJP should now fight alone. We have seen workers demanding from top leadership that there should be no more alliance with any political party in Bihar, and they should move ahead as the single largest force in the state of Bihar. So we are right now showing you the live pictures of these protests. बिहार की सरकार के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने धोखा देने का काम कर रहा था, लेकिन मैं दलित समाज में जन्मा बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने दलितों से लड़ा करके सवर्णों को सवर्णों से लड़ा करके sitting here on the protest, and then we will be able to understand the main demand of these leaders who are sitting here on the protest. Let's try to speak to who is also there, BJP's president, Bihar BJP president, who is present here. Let me try to these leaders who are present here. Remember that BJP has been claiming that JDU has deceived them, and that is why they are here. BJP is now calling Nitish Kumar as Kursi Kumar, as Palturam. This is what BJP is using the terms for Nitish Kumar. After this short break, we will get more and more pictures, more and more voices as BJP hits the streets against Nitish Kumar in Patna. Stay tuned for more updates. Never happened when you were under scandal, Karthik. You should be able to speak about it, Karthik. China's Air Force and Navy continued military exercises close to Taiwan. The drills by China have disrupted flights and shipping in one of the busiest zones for global trade. China has sent military ships and planes across the midline that separates two sides in the Taiwan Strait and launched missiles into waters surrounding the island. Ignoring calls to calm tensions, Beijing instead extended the exercises without any warnings. Remember, Taiwan put out a statement that Chinese military drills aren't just a rehearsal for an invasion of the self-governing island, but also reflect ambitions to control large swaths of Western Pacific. Meanwhile, in response to the drills, Taiwan has put its forces on alert, but has so far refrained from taking active countermeasures. This comes in the backdrop of US House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan. Agency report for Republic TV. जी, आपने इस्तीफा दे दिया।
हमारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। क्या दिक्कत हुई नरेंद्र मोदी और अमित शाह से? क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं। पूरे देश में इस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। विभिन्न चोटियों पर इस फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को, उसको झंडे को लेकर अब चोटियों पे आए हैं, उसका हम जश्न मना रहे हैं। भारत माता की जय। Mr. Rahul Gandhi raised the issue of institutions. जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित है। Wax heterologous COVID-19 booster for restricted use in emergency situation. In the month of July, the National Technical Advisory Group on Immunization recommended biological E-Scobi-Wax as a heterologous booster for adults. Earlier, biological E-Scobi-Wax received DCGI approval for a heterologous COVID-19 booster shot for restricted use in emergency situation. It is the first vaccine in India to get DCGI approval for a heterologous COVID-19 booster shot. After a major political shift in Bihar, Nitish Kumar and Tejasvi Yadav will be sworn in as Chief Minister and Deputy CM of the state respectively at 2 p.m. beginning the Mahagathbandhan back into power in the state. Sources in the know inform that more ministers will be inducted in the cabinet at a later stage. Shrikant Tyagi was sent to 14 days judicial custody till August 23rd by a Surajpur court after his arrest. We continue to track the biggest story of the day as BJP has hit the streets here in Patna, where BJP is protesting against Nitish Kumar. BJP is using the words like Kursi Kumar, Paltu Ram for Nitish Kumar. Remember that this protest is taking place just ahead of the oath-taking ceremony, which is also to take place today at 2 p.m. Where Nitish Kumar, along with Tejasvi Yadav and other two leaders of Mahagathbandhan will be the part of this ceremony. And BJP is now saying that Nitish Kumar has now